So are you able to see the whiteboard again? Yes, sir. Okay. So what I was doing, I'm showing the block diagram for a problem. So let me draw it again. So there is a two-stage amplifier with some data which has been given. Input, and there is the output. So this is the first stage of the amplifier, and another is the second stage. Two-stage amplifier is there, where for stage 1 the noise figure has been given, which is given as 2 dB, and also the gain of the first stage is given as 12 dB. Okay, and for stage 2 is also the noise figure is given, as well as the gain of second stage is given as 10 dB. Okay, so here is a two-stage amplifier which is shown here, where the noise figure and gain for the particular stages are given. So you have to find out the overall noise figure. Okay, find out. The question is, find out the overall noise figure. So as I have already told you that whatever the data is given in dB, you have to first convert it into what? You have to convert it into the ratio. So what we already know, that the noise figure is given by noise figure, or the equivalent noise figure for multi-stage amplifier is given as F1 plus F2 minus 1 by A1, because it is a two-stage amplifier. So formula जो हमने दिया था वहाँ पे हमने डॉट डॉट प्लस F3 minus 1 by A1 A2 ऐसे कुछ लिखा था ना. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये टू स्टेज एम्पलीफायर है, सो वी डू नॉट नीड दिस पार्ट. Okay, so we do not need this part in this particular case because it is a two stage amplifier. अगर थ्री स्टेज एम्पलीफायर दिया होता तब हम F3 तक जाते. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर F1 A1 और F2 की जरूरत है. सो हम इस्तेमाल करके इसका, तो ये जो भी डाटा दिया हुआ है, these all data are given in terms of decibel. So you have to convert it into ratio. So हम क्या जानते हैं, F जो dB में होता है वो क्या होता है, 10 log 10 F ऐसा होता है. जो dB में नॉइज फिगर है वो dB में नॉइज फिगर दिया है. सो हमें यहाँ से इसे रेशियो में निकालना होगा. तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें F मालूम करना हो. So this F can be easily found out by using F is equal to what can be written as anti-log of 10, and it should be the ratio. So F1 we have to find out F1 the ratio. So whatever be the value, you have to have, it will be F by 10. So this F will come in the ratio of below this F. So you can use your calculator, or sometime if there will be no calculator, you will the value of anti-log will be given. So in university exams you are allowed to use your calculators. So it may be that in question it will not be given, the value of anti-log will not be given. So you have to find out the values. Okay. So convert this dB value in the ratio value,
and put the values in the formula itself. So the formula is this. You have to put it the values in this form. Again, you will have gains also. A gain is also given. So you have to find out the uh, gain also in रेशियो फॉर्म. ठीक है, तो उस तरह से हमें जो भी ये वैल्यू मिलेगा, वी विल पुट दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर. सो आई एम राइटिंग हियर द आंसर. Go through your calculator and find out the value. It will come to be, so the value of f in dB will come to be 2.5 dB. Okay, so you can easily find out. Okay, so next. So एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं, तो वो एक सेट ऑफ एम्पलीफायर्स या मिक्सर से होकर पास करते हैं ना. जो हम हमारा रिसीवर है, दैट रिसीवर विल कंसिस्ट ऑफ सम ब्लॉक्स. सो वो जो ब्लॉक्स हैं, उन सारे ब्लॉक्स में से कुछ ब्लॉक मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. दैट वी विल हैव सम एम्पलीफायर, we will have some mixer, and there will be an IF amplifier. Okay, so IF amplifier, IF stands for intermediate frequency amplifier. IF amplifier ये receiver में होता है. जब हम लोग receiver details में पढ़ेंगे, in that case we will see these things over there, that what are the blocks and what are their uses. रिसीवर हमें पढ़ना है, रिसीवर सुपर हिटर रिसीवर और TRF रिसीवर हमें पढ़ना है. So we will go through this in explained way. So एम्पलीफायर है, देयर इज अ मिक्सर और IF एम्पलीफायर. तो हर एक स्टेज का कुछ गेन होगा और हर एक स्टेज का हर एक स्टेज में कुछ नॉइज जनरेट होगा, एंड दैट विल एड अप टू द our signal. So there will be some frequency. So let it be noise figure F1. There will be gain, okay, A1, and instead of this there will be some T equivalent. So what is T equivalent? T equivalent 1. So T equivalent 1 is the temperature. What? Noise temperature. Okay, for the mixer stage there will be some noise figure F2, the gain A2, the noise temperature T equivalent 2. Okay, in the same way for this IF amplifier there will be some F3, okay, A3 and T equivalent 3. So for all these blocks there are the values which will be given in your question itself. So I am giving one more question. So a mixer stage has a noise figure of 20 dB. Okay, so mixer stage के लिए क्या दिया हुआ है? Mixer stage के लिए mixer stage will have a noise figure, mixer stage with noise figure of 20 dB. Okay, this mixer stage is preceded by an amplifier. So इसके पहले एक amplifier है, preceded with an amplifier which has a noise figure with noise figure 9 dB. Okay, and an available gain of 15 dB.
gain of 15 dB. So you have to find out the overall noise figure okay. So mixer stage with a noise figure of 20 dB, which is preceded with an amplifier with noise figure of 9 dB and available gain of 15 dB. तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, मिक्सर स्टेज का दिया हुआ है. सो वी विल हैव so this mixer stage is preceded with an amplifier. So this mixer stage is preceded with an amplifier. So amplifier का gain, amplifier का noise figure दिया है और mixer का noise figure दिया है and we have a available gain of 15 dB और यहाँ पर gain दिया हुआ 15 dB का. So easily we can find out. So it can be termed as, so here we will have this 15 dB is nothing but the gain A1 mixer stage. So this is F2 is given here and preceded with amplifiers. So amplifier gain दिया हुआ है which is F1. Okay. So you can easily calculate by using formula. So formula apply करने के पहले ये फिर से ध्यान रखना है क्या कि जो वैल्यू है वो रेशियो में कन्वर्ट होना चाहिए. ठीक है, जो डीबी में वैल्यूज दिए हैं ये सारे वैल्यूज हमें कन्वर्ट करना होगा कहाँ, टू दी रेशियो वैल्यू. तो ये पिक्टोरियल वाला जो पार्ट है, सो दिस कैन बी, यू कैन ड्रॉ इट बाय द डेटा गिवन विद इन दी क्वेश्चन. ओके, so let me take one more example. Yes, so I am giving you the answer of this question. Calculate this by using the formula what we have discussed. So it will come in dB as the equivalent noise figure. In dB will be 10.44 dB. Okay, so calculate and see whether you are getting this value or not. Okay, so let me take one more example which is related with your noise resistance and the antenna resistance. So the question is, you have to find out the noise figure for which noise equivalent resistance. So noise equivalent resistance, that is R equivalent, is given as 2518 ohm and RT, this is lump resistance. Lumped resistance. Lump resistance is given as 600 ohm. And what is given that it is driven by a generator whose output impedance is 50 ohm. Okay, so you have to find out the noise figure of amplifier. So इस बार हमें क्या क्या दिया गया है, आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है और आर टी दिया हुआ है. सो व्हाट दिस आर टी रिप्रेजेंट्स, आर टी क्या है, ये लंप रेजिस्टेंस है जो कि इस आर इक्विवेलेंट को छोड़कर है. मतलब पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम जोड़कर लंप रेजिस्टेंस कह रहे हैं. तो ये लंप रेजिस्टेंस दिया हुआ है.
सो यहाँ पर क्या है, जब हम आर इक्विवेलेंट डैश निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट डैश मतलब जो इनपुट में रेफर करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस को, सो आर इक्विवेलेंट डैश विल बी आर इक्विवेलेंट माइनस आर टी, क्योंकि आर इक्विवेलेंट डैश में ये आर टी वाला जो पोर्शन है वो नहीं आता है।